Good afternoon, Mr. Nair. Good afternoon, sir. How are you? I'm good, sir. Thank you so much, sir. Good. Sir, thank you for giving us this opportunity to hold this session with GDMA. Right. And in the panel, we have got our Executive Director, Shishir Kumra. Okay. Yourself, Ramesh ji, from the GDMA, President GDMA. Right. And we have the Technical Officer, Chief Technical Officer, Srirang Bodh, and Okay. our Turkey expert, Miraj, in the panel. Okay. And as per the agenda for the day, we will start the session. I'll just ask my colleague Jess whether we can go online, and I'll speak on the agenda part, and that would cover, a welcome note by yourself, sir, and you can take a time to educate all of us. Okay. Followed by a brief introduction about the GPC and the milestone which we have taken up for the Turkey, which will be given by our Executive Director, Mr. Shishir Kumra, followed by which I will be presenting the case of the KKDIK, the Turkey REACH, how to do and when has to be done, and then we will have the Q&A session, and the closing remarks would be chaired by Shishir Kumra ji. Okay. May I invite you, sir, to take the proceedings forward, and please address the gathering which has happened because of your kind gesture and GDM in particular. Please, sir. Good afternoon, my friends. Welcome to this interactive webinar for Turkey KKDIK registration jointly organized by GDM and GPC Regulatory Industry Private Limited, Sweden, on behalf of office bearer, executive committee members and members of our association. I welcome the panelist, Mr. Shishir Kumar, Executive Director of GPC, Dr. Jayachandran Nair, CEO GPC India, Mr. Siraj Bhoot, CTO GPC India, Mr. Mira Mart Pelister, Turkey Business Coordinator and Regulatory Research GPC participant for today's webinar. Friends, the Gujarat Die-Stuff Manufacturing Association GDMA was established in 1962. It has made spectacular progress during the period of last 58 years and has been playing a dynamic role in protecting, promoting and consolidating the position of die-stuff industries in Gujarat. It has emerged as apex body representing 80% die-stuff manufacturers of Gujarat, who are contributing approximate 60% of total export of country, which account of approximate 20,000 crore and approximate 10,000 crore local sales. I am thankful to GPC Regulatory India Private Limited, Sweden, for coming up such an informative webinar. Friends, we have a very good opportunity to explore the market in Turkey. We all must take the opportunity and register for the KKDIK. I am sure that members will surely get benefit from this webinar. As everyone is aware about working of GDMA, hence I will not speak more and request Dr. Jayendran Nair to move ahead with the webinar. I wish you all the happy Diwali and prosperous New Year. Thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you so much for your kind words. And as per permission, we take forward this session. Right. May I request Mr. Shishir Kumra, the Executive Director of GPC, to kindly introduce GPC to the participants and give a few words of the GPC milestone with KKDIK. Yeah. Shishirji, the floor is yours. Sure. Thank you. Thank you, Ramesh bhai. It's been a pleasure to hear you and also be connected to GDMA. It has been a long time. We have been interacting with various companies of GDMA. We have worked with
several of companies from GDMA in that case who are members, and we have been had a good opportunity to interact with them in past, and we continue to work together. So I'll just shortly introduce the organization. This has been slight change in recent years, and wanted to just brief you what we have done in recent past. So I'll go to my slides. Yes. Yeah, so basically, I mean, this is the agenda for today, and Dr. Nair would start with the presentation on KKDIK, and then we'll have a Q&A, wherein, I mean, you can already, as Dr. Nair said, that you can start posting your comments when you feel or when you have them on the chat box, and we will cover all these comments at the end. And we have our Turkish expert who is also available with us, and we also have Mr. Srirang Buddha from our Nagpur office, who is our CTO, and lastly, after the Q&A, we can have some concluding remarks. So, well, we started as sustainability support services in the beginning, and in 2008, and we have been very closely associated with all the members here. I can't see my screen here. Okay, no problem. So yeah. So and then so now it's fine. So now since 2020, we have renamed our organization as Global Product Compliance. This also has been the reason because we had acquired a couple of other small companies who are working with us. So we are similar size companies. We are working in different areas such as agrochemicals, dyes, and chemical regulatory management, as well as because we have been expanding into other countries for providing regulatory services. So in many ways, our objective is that we provide to our clients a one-stop solution, that if they need us in Turkey, we are available for them to provide the services in Turkey. If they need us in Korea, we are available there. And if they need us in Eurasia, I mean, that's an upcoming regulation. And 2021, there will be an issue about UK REACH, because Brexit would happen by the end of this year. And then maybe there will be some people who have their most interest in UK rather than in Europe, or they have interest both in Europe and UK. Then there are certain adjustments that may be required, and we'll brief you on in due course about how we can help you, or what you need to do in case you are exporting to UK. So, I mean, this is a brief portfolio. We work with close to 9,000 substances. We manage the data and information on almost 9,000 substances. So it's a very good knowledge base, and this also gives us a very good experience and confidence to respond to various specific queries and questions from the client. And this is our expertise, and this has been our sort of strength in for so many years. Today we are actually supporting close to 1,100 clients. I mean, which is our proud sort of milestone. And very important to note is that out of this 1,100 clients, we have been benefiting the clients coming from other consultants to us in last 7 to 8 years. That amounts to close to 200 clients who have jumped from other consultants because they were not happy for various reasons, or they had opted us against the other consultants. So and there has been very few clients who left us in this same period. So I mean, we are very happy to have this important milestone. We have registered close to 1,200 substances for our clients in Europe, and also that we have been lead registrant for almost 400 substances. And lead registration is something which is very important, and I think in due course we can actually even promote this idea with the GDMA group, because I mean GDMA members, because lead registration is a way where we can actually assess certain chemicals where we know that these are the chemicals where we can do the registration. The cost can go down slightly, because then we can actually have the cost in our control. Today, when the lead registrant is an external consultant or a manufacturer, then it becomes very difficult, because he can give X amount of rate for the work he has done, and it's very difficult to negotiate that. But when we take the lead of the substance in, say, Korea or in Turkey, then we can have the control of the cost
to some extent. Obviously, there are some studies that will be required. Obviously, there will be consultancy work and other things, but that becomes a main issue, and we can help you out to take the lead. We can help you out to be more cost competitive, and maybe there are other people who will join the joint submission, and there could be some recovery of the cost from those joint submission. So that is something very important, and I think you should note. I mean, people can take a note of that. I think we already talked about pre-registration. We do provide SDS in almost 30+ languages, including Turkish and Korean and Russian, etc., and all the European languages. Well, we have very good network with a lot of study laboratories, depending on the qualifications and type of studies that needs to be done. And we have been very much proactive in developing certain type of IT based system for our clients, so that their compliance needs and their questions and queries can be answered immediately, quickly, and other things. And I'm sure that a lot of my clients are using the supply chain communication portal, wherein your buyer can request, can you confirm that this is the client I'm buying from, and are you the only representative for this? Is this substance registered? And this can happen quickly online, and we do use this portal for the benefit of our clients, and which is very useful. And I think many times they are very quick to respond, and they get a certificate within a couple of days. Yeah. So this is our overview of the various countries where we are actually acting. So Europe, I've already elaborated what are the numbers there. In South Korea, very active, and some of these numbers will be growing in due course. This is initial period. The first stage of registration in South Korea is 2021 December, and we expect that around 40 odd substances would be registered there, and there are more members who are going to join and want to go for registration. Eurasia, there was an inventory notification that was held in last year, I mean by August, end of early August, and therein we have submitted around 450 notifications to the inventory by around 78 companies. And we do prepare the SDS in Russian language as well as in Turkish language. Today we have, so far in Turkey, we have already submitted around 1200 pre-registrations for around 150 companies, and several of them are your members, and several of them will be new people that will be coming up. But I mean, we have yet 2 months to go, and probably we will be having more clients and more numbers of substances that will be registering in Turkey, pre-registering in Turkey. Yeah. One very important thing to note here in Turkey is that once you can pre-register before 31st December this year, then you are able to sell the product in Turkey. After January, if you do pre-registration, it is possible to do a late pre-registration, but you will not be able to sell in Turkey with that late pre-registration. You will only be able to do your registration. So that will be a complicated process. If you don't pre-register now, then late pre-registration will demand you to do a registration first. Okay, so that is the requirement. But I think this is this will be elaborated by Mr. Nayar's, Dr. Nayar's presentation. Finally, these are the services that we provide. We are very actively engaged into the Indian Chemical Regulatory Management and Safety rules, but obviously we are also picking up the concerns of the clients and trying to provide this information to the ministry through various committees, that please consider these comments. There are things that are actually which are not in favor of the industry, or they are actually unduly taxing the industry in certain cases. So we are bringing up those comments to the industry as and when it is possible. We do work with European REACH, Korean REACH, Eurasia. We have already talked about it. Taiwan also, there are very few clients for Taiwan, but we do work actively with Taiwan, and we do provide cosmetic regulation services. So we are very actively engaged. We are a team of around now 120 people all over from India to Taiwan to Europe, etc. So we look forward for any service that you may need in this area. But I mean, I will, rather than promoting the organization, now stop here, and I want you to go for the technical discussion, which is more probably the item of today. And I thank you all, and I thank GDMA to cooperate with us on this particular project, on this particular presentation, and also this webinar. Thank you. Thank you. Thank you so much, Shishirji. If the panel permits, I can share my presentation.
And Yeah. Yeah, you give me can. 1 minute. Presentation. Is it visible? Yes. Is it visible now? No? Yeah. Yeah. Okay. Okay. Thank you. Has it, Thanks. has it come up? Thank you so much. Thank you, Ramesh ji. Thank you, Shishir ji, for your kind words on the today's agenda and way forward. And I welcome all the participants here. My interaction with the GDMA, I could understand from them that I should try to speak in mixed language, Hindi, Gujarati, English, whichever is comfortable with my team. I mean the participants here. So I will try to mix the words so that everybody understands the need of the hour, and that is the purpose of this meeting, this interaction. It's not just to show the technicalities, but what is the important for the participants to understand and for them to implement the activities at their end. तो आज का जो स्कोप में हम लोग पूरा बैकग्राउंड बता देंगे क्या है इसके अंदर, व्हाट इज केकेडीआईके का स्कोप के अंदर, इसका टाइमलाइंस क्या है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, अपना प्री रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन में क्या करना पड़ता है, एंड उसमें अगर इवैल्यूएशन, ऑथराइजेशन और रिस्ट्रिक्शन वाला कोई केमिकल्स है तो उसका क्या सिनेरियो रहेगा, एंड जीपीसी एज योर ओनली रिप्रेजेंटेटिव हम लोग आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं. ना केकेडीआईके जो वर्ड्स का एब्रिविएशन है उसका एक्चुअली से ट्रांसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, इवैल्यूएशन, ऑथराइजेशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ केमिकल्स का. तो उसके पहले शब्द को लिया गया, पहले वर्ड्स को लिया गया एंड ये एब्रिविएशन बना है केकेडीआईके, एंड दैट्स हाउ इट इज नोन एज केकेडीआईके रीच रेगुलेशन. ये 23 जून 2017 को फोर्स में आया था, एंड इन प्रिंसिपल द अडेप्टेशन जो हुआ है एंटायरली यूरोपियन फंडामेंटल्स को लेकर इसको अडॉप्ट किया गया है. एंड द की फॉर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो इसको रेगुलेट करेगी, जो इसको कंट्रोल करेगी, दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड अर्बनाइजेशन ऑफ टर्की. लाइक ये रेगुलेशन के साथ साथ उन्होंने 3 और रेगुलेटरी लॉस को मर्ज किया है. उसमें एक जो लॉ था दैट इज रिगार्डिंग द सेफ्टी डाटा शीट ऑफ हैजार्डस सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स, दूसरा था इन्वेंटरी ऑफ कंट्रोल ऑफ केमिकल्स, एंड तीसरा रिस्ट्रिक्शन एंड बैन ऑन हैजार्डस सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स. तो ये 3 लॉस को मर्ज कर दिया गया है केकेडीआई के रूल्स के अंदर. ये हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना, ताकि when we all start into this work. Can you see the screen? Hello? Yes, you can see the screen. Yeah. So ये तीनों को मर्ज किया गया है एंड इससे वो केकेडीआईके का रूल्स बना है. केकेडीआईके का ऑब्जेक्टिव क्या है? लाइक यूरोपियन रीच ऑल्सो, यहाँ पे भी सेम ऑब्जेक्टिव है, टू फॉर द हाई लेवल प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन हेल्थ एंड द एनवायरनमेंट. एंड इन द प्रोसेस वो चाहते हैं कि हम लोग ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स बनाएं और अच्छे प्रोडक्ट्स बनाएं और कंपटीशन और इनोवेशन आ जाए मार्केट में. That is the objective. But holistically, human health environment is a key concern, and which is going to be taken care by KKDIK's aim. KKDIK का टाइमलाइन देखेंगे तो 2017 में शुरू हुआ. 17 से लेके 31 दिसंबर 2020 तक उन्होंने टाइम पीरियड फिक्स किया फॉर प्री रजिस्ट्रेशन. इसके अंदर जो भी प्री रजिस्टर करेंगे उनको प्रोडक्ट्स बेचने का परमिशन मिलेगा टर्की के अंदर. एंड वो करने के लिए इन दिस टाइम पीरियड 2 चीज होती है, एक तो नोटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस अंडर द प्री रजिस्ट्रेशन एक्टिविटीज, एंड दूसरी जो है क्लासिफिकेशन, लेबलिंग एंड पैकेजिंग नोटिफिकेशन, वो मैंडेटरी है. वो आके इंपोर्टर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स को बनाना, वो करना मैंडेटरी. सीएलपी नोटिफिकेशन इक्वली मैंडेटरी है, जस्ट लाइक द प्री रजिस्ट्रेशन एक्टिविटी. 1 जनवरी 2021 ऑनवर्ड्स और 31 दिसंबर 2023 तक रजिस्ट्रेशन पीरियड का विंडो खुला है. तो एक बार ये प्री रजिस्ट्रेशन का विंडो बंद हो गया तो नेक्स्ट विंडो जो है वो सिर्फ रजिस्ट्रेशन का है. जो भी सब्सटेंस प्री रजिस्टर हुआ है उसको रजिस्टर करेंगे तो 31 दिसंबर 2023 के बाद भी आप बिजनेस कर सको. अगर ये रजिस्ट्रेशन पीरियड के टाइम पे ऑलरेडी आपने जो सब्सटेंस को प्री रजिस्टर किया है उसको आप रजिस्टर नहीं करते हो तो 23 दिसंबर के बाद आप वहां पर प्रोडक्ट बेच नहीं पाओ. एंड रजिस्ट्रेशन का एक्टिविटीज के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है?
उसमें आपको एक केमिकल सेफ्टी असेसमेंट रिपोर्ट बनाना पड़ता है, आपको एसडीएस देना पड़ता है और एक डॉसियर बनेगा फॉर रजिस्ट्रेशन जिसके अंदर थोड़ा स्टडीज होती है, एनालिटिकल डाटा सब होता है, दैट हैज टू बी सबमिटेड। अभी डेडलाइन ऑफ खत्म हो गया रेस, उसके बाद का क्या, ये हमेशा क्वेश्चन आता है कि आफ्टर रजिस्ट्रेशन व्हाट। सो इन द पोस्ट रजिस्ट्रेशन स्टेज रजिस्ट्रेंट की जिम्मेदारी बनती है कि दे हैव टू अपडेट एंड कीप ऑल इंफॉर्मेशन रेडी विद देम। दूसरी बात यह है वहां पे एनेक्स 14 करके एक लिस्ट होता है जिसमें सारे ऑथराइज सब्सटेंस के नाम लगे होंगे, उस पर आप लोग को ध्यान रखना है, वॉच रखना है, आई लगाना है उस पर, क्योंकि वहां तक आपका सब्सटेंस उस कैटेगरी में गिरता है देन यू आर सपोज टू गो फॉर ए परमिट एप्लीकेशन फॉर यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट इन दैट कंट्री, इन टर्की। अभी अपने स्कोप में टर्की में क्या एग्जम्प्टेड है और क्या करना है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, वेस्ट है, इन ट्रांसिट मटेरियल जो होता है, नॉन आइसोलेटेड इंटरमीडिएट्स जो होंगे, जो टेम्पररी स्टोर किया गया उनके फ्री जोन में इन टर्की, या फिर जो केमिकल सब्सटेंस जो डिफेंस इंडस्ट्रीज के लिए यूज होने वाला है, और वो प्रोडक्ट्स जो इंपोर्ट होती है और दोबारा वैसे का वैसे री एक्सपोर्ट कर लेते हैं, वैसे केमिकल सब्सटेंसेस को केकेडीआई के स्कोप से बाहर रखा गया है। केकेडीआई के अंदर कितने सेक्शन पार्ट्स है, टोटल 12 पार्ट्स है, और ये 12 पार्ट पूरा गाइडेंस देती है हाउ टू कैरी आउट द रजिस्ट्रेशन एक्टिविटी इन टर्की फॉलोइंग द केकेडीआई के रूल्स एंड रेगुलेशंस। पहला जो पार्ट में तो जनरल बातें की जाती है, जनरल इश्यूज को उन्होंने डिटेल में बताया है। सेकेंड पार्ट में किस तरह से सब्सटेंस का रजिस्ट्रेशन करना है उसके बारे में उन्होंने डिटेल में बताया है। पार्ट 3 स्पीक्स अबाउट द डाटा शेयरिंग एंड अवॉइडेंस ऑफ अननेसेसरी टेस्टिंग्स, उसके बारे में उन्होंने डिटेल में बता दिया उसके अंदर। पार्ट 4 के अंदर सप्लाई चेन में क्या क्या इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, क्या क्या बताना चाहिए, उसके बारे में डिटेलिंग किया हुआ है। पार्ट 5 इज अबाउट द डाउनस्ट्रीम यूजर्स एंड पार्ट 6, 7 एंड 8 ये सारे इवैल्यूएशन, ऑथराइजेशन और रिस्ट्रिक्शन जिस सब्सटेंस पे लगने वाली है उनको, उनका प्रोसेस क्या क्या रहेगा, हाउ टू गो फॉर इवैल्यूएशन, उसमें क्या इंफॉर्मेशन देनी है, ऑथराइजेशन में क्या क्या इनपुट्स लगता है और रिस्ट्रिक्शन में क्या क्या चीजें देनी पड़ती है फिर वो प्रोडक्ट को यूज करना, उसके बारे में उन्होंने डिटेल में बात की है। फीस स्ट्रक्चर्स के बारे में पार्ट 9 का सेक्शन में बोला गया है। पार्ट 10 स्पीक्स अबाउट जो इंफॉर्मेशन केकेडीए की अथॉरिटीज जो पोर्टल पर रखेंगे वो क्या रहेगा, क्या क्या इंफॉर्मेशन वो पब्लिक को बताएंगे, और अगर किसका कोई सब्सटेंस आर इन द कैटेगरी ऑफ कॉन्फिडेंशियल बिजनेस इंफॉर्मेशन उसको किस तरह से सीक्रेट हो रखने वाले, ये सब चीजें पार्ट 10 के अंदर उन्होंने बताया है। Part 11 is about the inspection and enforcement. Part 12 speaks about the miscellaneous and the final provision within KKDIK. So more or less it's a very simple thing, but the problem is it's in Turkish language. Pre-registration में करना क्या है और क्या होता है, हर एवरी सब्सटेंस पर्टिकुलरली फॉर्मुलेशन के अंदर जो होता है, अपना जो जीडीएमए के मेंबर्स है, हमारे सबके पास बहुत सारे सब्सटेंस प्योर सब्सटेंस होंगे और बहुत सारे हमारे जो प्रोडक्ट्स होंगे मिक्सचर्स होंगे जिसको फॉर्मुलेशन कहा जाता है। तो अगर अपना प्रोडक्ट एक फॉर्मुलेशन है तो उस फॉर्मुलेशन के अंदर जितने भी कैश नंबर्स आपके सीएस नंबर जो होते हैं वो आप मेजर कीजिए कौन सा 1 टन के ऊपर क्रॉस कर रहा है आपका एक्सपोर्ट जो टर्की में जा रहा है उसके लिए, उन सबको लिस्ट करना है, उन्हीं का अपने को प्री रजिस्टर करना है। डेडलाइन क्या है 31 दिसंबर 2023 और एक 2020 आई एम सॉरी, द डेडलाइन इज 31 दिसंबर 2020। ये कब तक ये प्री रजिस्टर्ड नंबर वैलिड है, इट इज वैलिड टिल 31 दिसंबर 2023 तक। प्री रजिस्ट्रेशन जो हम लोग यूज करते हैं उसका ऑफिशियल नेम जो केकेडीआई के में उसका नाम है प्री सीफ नोटिफिकेशन, और ये सीफ का जो फॉर्मेशन है इट कैन गो टिल द डेडलाइन इज अवेलेबल। इट्स अ सिंपल प्रोसेस, उसमें ज्यादा कुछ इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कैश नंबर, आपका टनेज, आपका केमिकल नेम, दैट्स इट, ज्यादा कोई इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं पड़ती उसके अंदर। एंड एक बार वो डॉक्यूमेंट सबमिट कर लेते हैं द अथॉरिटीज विल गिव अस ए नोटिफिकेशन नंबर आफ्टर द सबमिशन। दिस इज व्हाट वी हैव टू डू फॉर द प्री रजिस्ट्रेशन। उसका डेडलाइन इज 31 दिसंबर 2020। रजिस्ट्रेशन में क्या है, देयर आर स्टिल सम कैटेगरी फॉर एग्जम्पशंस, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप बायोसाइड और प्लांट प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट करते हो वहां पे तो वो एग्जम्प्टेड है। मेडिसिन एंड वेटनरी जो चीजें ह्यूमंस के लिए होते हैं वो भी एग्जम्प्टेड है।
देयर आर सम सब्सटेंसेस जो उनके एनेक्स 4 और एनेक्स 5 में लिस्ट किया गया है, वो चीज रजिस्ट्रेशन से एग्जम्प्टेड है. पॉलीमर्स आर एग्जम्प्टेड बट मोनोमर्स आर टू बी प्री रजिस्टर्ड एंड सब्सिक्वेंटली रजिस्टर्ड. और री आइसोलेटेड इंटरमीडिएट्स एंड ट्रांसपोर्टेड इंटरमीडिएट्स, इसको भी उन्होंने एग्जम्पशन दिया गया है. जो प्रोडक्ट टर्की में रिसाइकल करके यूज करते हैं उसको एग्जम्पशन है. अच्छा, एक मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है एक्सपोर्टेड फ्रॉम ए सप्लाई चेन एंड री इंपोर्ट विद द सेम सप्लाई चेन, उनको भी उन्होंने एग्जम्पशन दी गई है. फूड एंड फीड स्टॉक को भी एग्जम्पशन मिला है, और वो सब्सटेंस जो लेस देन 1 टन है उसको भी रजिस्ट्रेशन से एग्जम्पशन मिला गया है. रजिस्ट्रेशन करने के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है? एक होता है बेसिक रिक्वायरमेंट, जैसे कि आपको अपना क्लासिफिकेशन लेबलिंग का जो इनपुट्स है एज पर एनेक्स 6 ऑफ दर KKDIK वो देना होता है. अपना प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ द सब्सटेंस वो उनको देना होता है. एंड देन वी हैव टू गिव द आईडी ऑफ द रजिस्ट्रेंट एंड आईडी ऑफ द सब्सटेंस. जैसे टनेज बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे डाटा का रिक्वायरमेंट बढ़ते जाएगा फॉर द रजिस्ट्रेशन वर्क. 1 से 10 टन अगर आप दे रहे हो और आपका सब्सटेंस इज नॉट अ हैजार्डस सब्सटेंस, तो आपको सिर्फ फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज का ही डिक्लेरेशन देना है फॉर द रजिस्ट्रेशन वर्क फॉर 1 to 10 टन. लेकिन अगर आपका जो प्रोडक्ट है इट हैपेंस टू बी हैजार्डस प्रोडक्ट, इन दैट केस along with the physico chemical properties आपको टॉक्सिकोलॉजिकल एंड इकोटॉक्सिकोलॉजिकल डाटा भी देना मैंडेटरी होता है, जो कि उनके एनेक्स 7 में लिस्टेड है अंडर KKDIK के अंदर. 10 टन से अगर ऊपर जाता है एंड 100 टन से नीचे है तो रिक्वायरमेंट डाटा इंक्रीजेस. और यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि द केमिकल सेफ्टी रिपोर्ट which will be having an exposure information has to be submitted. टनेज बैंड अगर 100 से और भी ऊपर है, फॉर एग्जांपल 100 to 1000 है, तो वहां पे एक सिनेरियो ये बताया उन्होंने कि वी हैव टू सबमिट ए टेस्ट प्रपोजल. टेस्ट प्रपोजल टू प्रूव इट्स रियल रिक्वायरमेंट अंडर द फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज. फॉर एग्जांपल कोरोसिविटी का होगा, एक्सप्लोजन का होगा, वो सब करने के लिए वी हैव टू सेंड देम ए टेस्ट प्रपोजल. वंस द कमिटी अप्रूव्स दैट ओनली देन वी कैन परफॉर्म दैट टास्क. लाइकवाइज अगर आपका 1000 से और अधिक है टनेज एक्सपोर्ट्स टू टर्की, and during the registration process for the ecotoxicological and toxicological properties a test proposal submission is mandatory. अभी अगर ट्रांसपोर्टेड आइसोलेटेड इंटरमीडिएट का रजिस्ट्रेशन करना है तो वहां पे क्या सिनेरियो बैठता है? तो डाटा का रिक्वायरमेंट पहले तो बहुत ही कम हो गया. जनरल इंफॉर्मेशन जो वहां पहले थी वो यहाँ पर भी एप्लीकेबल है, लेकिन 1 to 1000 टन पर एनम तक आपको सिर्फ डिटेल्स ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट मेजर्स, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज एंड उसका इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरमेंट ही बताना है, जो कि उनके एनेक्स 11 के अंदर कवर किया गया है. अगर अपना टनेज 1000 से ज्यादा है और अंडर ट्रांजिट है तो वहां पर फिजिको केमिकल डाटा, टॉक्सिकोलॉजिकल डाटा एंड इकोटॉक्सिकल प्रॉपर्टीज का ही सबमिशन करना मैंडेटरी होता है. सो कंपेयर टू द प्रीवियस केस, ट्रांसपोर्टेड आइसोलेटेड इंटरमीडिएट्स के लिए डाटा रिक्वायरमेंट इज लेस. रजिस्ट्रेशन अगर अपना 10 टन से ज्यादा है तो उस केस में केमिकल सेफ्टी रिपोर्ट जरूरी है. लेकिन अगर अपना 10 टन से कम है तब भी सिनेरियो बैठता है जहां पे आपको CSR रिपोर्ट बनाना कंपलसरी बनता है. वो सिनेरियो क्या है? वो सिनेरियो ये है कि आपका सब्सटेंस इन मिक्सचर में ऐसे इंग्रेडिएंट्स है जो उनका थ्रेशोल्ड डिफाइंड है एनेक्स 1 ऑफ CLP, उसको क्रॉस करता है. इन दैट केस भी आपको CSR बनाना पड़ेगा इवन दो योर टर्नेज इज लेस देन 10 टन पर एनम. दूसरा सिनेरियो क्या बैठता है? अगर अपना प्रोडक्ट जो है परसिस्टेंट है, बायोअक्यूमुलेटिव और टॉक्सिक है, या वेरी परसिस्टेंट है, वेरी बायोअक्यूमुलेटिव है और उसका कंसेंट्रेशन आपके प्रोडक्ट के अंदर 0.1% से ज्यादा है, तब भी चल के अपने को CSR बना के सबमिट करना कंपलसरी होता है. और CSR रिपोर्ट्स में देना क्या है? वी आर सपोज्ड टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑन द ह्यूमन हेल्थ, फिजिकल केमिकल हैजार्ड्स, एनवायरमेंटल इंपैक्ट एंड दिस हैजार्ड्स एंड इवैल्यूएशन ऑफ द persistent bioaccumulated toxic properties. ये कौन बना सकता है? It can be prepared only by a chemical safety assessment expert. ये जरूरी है अंडर KKDIK का रूल्स के अंदर. दूसरा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो है वो अपने को सेफ्टी डाटा शीट बना के सबमिट करना. वहां के हिसाब से इट हैज टू प्रिपेयर्ड ओनली बाय ए एक्सपर्ट एंड ओनली इन टर्किश लैंग्वेज एंड
हैजार्डस होगा अपना सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू CLP, तब दूसरा अगर वो PBT और वेरी पर्सिस्टेंट वेरी बायोएक्टिव में आता है, और अगर वो सब्सटेंस ऑफ वेरी हाई कंसर्न है एंड इट इज इन द कैंडिडेट लिस्ट फॉर ऑथराइजेशन, वैसे सिनेरियोज में SDH इज मैंडेटरी, it has to be in Turkish language, it has to be in the format as given by the Turkey KKDIK, जिसमें 16 हेडिंग्स के सेक्शंस होते हैं। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कोई लीड रजिस्ट्रेंट बनेगा एंड द रेस्ट कैन ज्वाइन द लीड रजिस्ट्रेंट, मतलब ज्वाइंट सबमिशन फॉर रजिस्ट्रेशन इज पॉसिबल। तो जो भी लीड बन लेता है, द अदर्स विल फॉलो देयर इनपुट्स एंड जो इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है विल बी प्रोवाइडेड बाय द लीड रजिस्टर एट अ सर्टेन कॉस्ट, जो LOA के अंदर वो देंगे। दैट इज अ फीस फॉर द रजिस्ट्रेशन व्हिच LOA इज गोइंग टू गिव और द लीड रजिस्टर इज गोइंग टू गिव इट टू यू। अभी फीस कितना है, KKDIK का ऑफिशियल फीस कितना है अभी जो पब्लिश हुआ है, तो आप देखेंगे तो लोएस्ट कैटेगरी स्मॉल एंटरप्राइज जो होंगे, जिसको ज्वाइंट सबमिशन करना है और जिसका टनेज बैंड 1 to 10 टन पर एनम ही है, उनको तकरीबन 5 यूरो देना पड़ेगा। दैट इज द लोएस्ट प्राइस ऑफिशियल फीस फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर KKDIK। हाईएस्ट फीस कितना है, अगर आपका एंटरप्राइज लार्ज है और आप खुद सेल्फ सबमिशन कर रहे हो एंड इफ द क्वांटिटी इज 1000 टन पर एनम से अधिक, तो अधिक से अधिक आपको 1500 यूरोस तक का एक्सपेंस उसमें आ सकता है। इसका जो हमने जो यहाँ पे वैल्यूज दिया, इट इज द एक्चुअली कन्वर्जन व्हिच वी हैड फ्रॉम द Turkish currency to the euro, but you can get the updates from our GPC website also. सारी बातें हो गई, बट लेकिन प्रोसेस में होता क्या है, लाइक रजिस्ट्रेशन के केस में क्या है, द मोमेंट आप एक एप्लीकेशन सबमिट करते हो, मिनिस्ट्री वो एप्लीकेशन रिसीव करती है एंड यू विल बी गिवन एन एप्लीकेशन नंबर एंड द डेट। फिर मिनिस्ट्री उसको 3 हफ्ते तक चेक करके आपको नोटिफाई करेगी कि उसमें कुछ पार्ट्स मिसिंग है कि नहीं है। अगर कुछ उसमें मिसिंग है तो आपको वो डेडलाइन देगी, भाई तुमको ये तारीख तक इस एप्लीकेशन को इंफॉर्मेशन सारा भर के हमको देना है। हमने अगर डेडलाइन को मीट कर दिया और हमारा दिया हुआ डाटा ओके है, तो मिनिस्ट्री उसको एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी। अगर एक्सेप्ट किया तो सब्सटेंस का रजिस्ट्रेशन हो जाता है एंड ए सब्सटेंस रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है विद ए गिवन डेट। लेकिन अगर एक्सेप्ट नहीं हुआ तो आवर एप्लीकेशन रिजेक्टेड। रिजेक्टेड केसेस का पैसा रिफंड नहीं मिलता है, जो ऑफिशियल फीस है उसका पैसा रिफंड नहीं मिलेगा। दिस इज व्हाट द टेक इट। यस सर, Sorry to disturb you. I have Yes, one meeting, that's why I can not join with you. Sorry. And I will other update people, you, sir. Please, Okay. please carry on, sir. I'll update you the entire presentation subsequently, sir. I'll Thank come you and very meet you as well. Thank you, you. sir. Thank you, sir. Thank you. So, if the application is rejected, in that scenario, the paid fees for the respective tonnage band, depending upon the class of the, the type, the lowest or the highest category, those funds will not be refunded. इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो भी डाटा देंगे उनको सही से डाटा देना है, उसका ट्रेसेबिलिटी होनी चाहिए। It has to be done with a correct analytical report. The entire dossier has to be prepared and submitted. ये हो गया बात रजिस्ट्रेशन की। अब बारी है इवैल्यूएशन की। इवैल्यूएशन में क्या होता है कि वी हैव टू सबमिट ए टेस्ट प्रपोजल, और वहां जाके हमको प्रूव करना पड़ता है प्रॉपर्टीज फॉर द टॉक्सिकोलॉजिकल, कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कार्सिनोजेनिक है, म्यूटेजेनिक है, या रिप्रोडक्टिव अफेक्टिंग सब्सटेंस है कि नहीं, एंड अगर वो परसिस्टेंट है, बायोअक्युमुलेटिव एंड टॉक्सिक है कि नहीं। तो इसका तुमको टेस्ट प्रपोजल देना पड़ता है अथॉरिटीज को। अथॉरिटीज विल टेक ए डिसीजन, भाई ये तुमको टेस्ट करना है नहीं करना है, जो तुमने टेस्ट कंडीशन मेंशन किया वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं है, एडिशनल आपको टेस्ट करने की जरूरत है कि नहीं, और वो अपना प्रपोजल को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। एंड अगर 2 लोग टेस्ट प्रपोजल लेके जाते हैं उनके पास, दे मे चूज इन फॉर म्यूचुअल प्रपोजल, कौन करेगा उस टेस्टिंग को। सो अगर वो टेस्टिंग अप्रूवल हो जाता है फॉर इवैल्यूएशन, तो अंडर इवैल्यूएशन प्रोसेस उसके कंप्लायंस चेक होता है एंड मिनिस्ट्री साधारण तौर पे 12 महीने के अंदर दे विल कम बैक टू अस विद देयर फीडबैक्स। ऑथराइजेशन में सारे जो अनेक्स 14 में जो होते हैं, those chemicals will be called as an authorized substance. उसका प्रोसेस क्या है? आर्टिकल 47 ऑफ KKDIK
जहाँ पे सब्सटेंस ऑफ वेरी हाई कंसर्न को रखा गया है। एंड सब्सटेंस ऑफ हाई कंसर्न वो होती है सब्सटेंस जो जो कार्सिनोजेनिक है, जो म्यूटाजेनिक है और जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को अफेक्ट करने वाले प्रोडक्ट्स है, या फिर वो एंडोक्राइन डिस्टर्बिंग प्रोडक्ट्स है, या फिर वो केमिकल सब्सटेंस परसिस्टेंट है, बायोअक्युमुलेटिव एंड टॉक्सिक टू द एनवायरनमेंट है। ऐसे सब्सटेंस को वो आर्टिकल 47 के अंदर SVC के नाम पे रखा गया है। ये जो लिस्ट है it keeps on adding, okay, and annex 14 to be annually updated by the authorities. तो हमको इस annex 14 पे हमेशा एक अपना ध्यान होना चाहिए, and this will start happening from when? From 2024. Restriction annex 17 के अंदर सब्सटेंसेस का नाम मेंशन किया जाएगा और जो है उसको रेस्ट्रिक्शन के सब्सटेंस कहते हैं। and any operation said use is forbidden, वो इसको यूज नहीं कर सकते। as on today there are 67 entries been made under varying sub entries and almost 91 cash number को under restriction डाला गया है। अगर हम लोग उसका एंट्री का नंबर देखते हैं, नंबर 47 पे जो अमाउंट जो चीज बताई गई है that is regarding the azodize, and उसका ज्यादा डिटेलिंग is provided in the appendix 8 and 9 of annex 17। तो हमें ये देखना पड़ेगा हमारे केस में, यहाँ पे GDMA केस में, कि हमारे ऐसा कोई प्रोडक्ट तो है नहीं जो एजोडाइज बेस्ड है, तो अकॉर्डिंगली उसका एक्टिविटीज अपने को देख के करना होगा। अभी मैन्युफैक्चरर, इंपोर्टर, डाउनस्ट्रीम यूजर एंड OR का एंड TPR का रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है अंडर KKD के, विल जस्ट रन थ्रू दैट। नाउ कंसीडर दैट हम लोग बार मैन्युफैक्चर कर रहे हैं एंड वी आर आउट लाइक इन इंडिया, नॉट इन द टर्की। So for you the case of OR is applicable। तो अभी कैसा होता है बिजनेस, लाइक आप यहाँ से सप्लाई करते हो, टर्की में आपका इंपोर्टर बैठा हुआ है एंड वो आपसे खरीदते हैं एंड देन दे गिव यू टू द डाउनस्ट्रीम यूजर। ये नॉर्मल सिनेरियो है। अभी नाउ इफ यू हैव एन OR इन बिटवीन, तब क्या होता है, द इंपोर्टर जो होता है दे विल बिकम द डाउनस्ट्रीम यूजर्स। सो इंपोर्टर का जो सिस्टम चला जाएगा, OR इज गोइंग टू एक्ट एंड दे विल बी, वो जो भी मटेरियल के थ्रू जाएगा देन दैट सब्सटेंस विल बी यूज्ड बाय द डाउनस्ट्रीम यूजर एंड उसको वो परिभाषा मिलेगी, नॉट एन इंपोर्टर्स डेफिनेशन। OR आप करने के बाद बेनिफिट क्या मिलता है कि आप डायरेक्टली टर्किश मार्केट में किसी को भी अपना प्रोडक्ट दे सकते हो। आप बंधे हुए नहीं हो कोई एक पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटर या पर्टिकुलर इंपोर्टर के साथ में, जो आपका बिजनेस एक्सपेंशन को रोक सकता है। OR के थ्रू जाने से दूसरा बेनिफिट ये है कि आपका नेगोशिएशन पावर, व्हेन यू गो फॉर रजिस्ट्रेशन, वी कैन टॉक टू पीपल, वी कैन ट्राई टू बार्गेन द प्राइस फॉर यू एंड आल्सो यू कैन वेंचर इनटू न्यू मार्केट्स एंड यू कैन नेगोशिएट प्राइस। नो, आई एम गोइंग टू गिव X प्राइस टू यू बिकॉज आई एम डूइंग ऑल द रिस्पांसिबिलिटीज व्हिच यू आर सपोज्ड टू डू, एंड देन द अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट इंक्रीजेस। इसका नेगेटिव पोर्शन में क्या है कि इफ यू आर नॉट अपॉइंटिंग एन OR, यू आर बाउंड टू ओनली वन पर्सन जिसको आप अपना डिस्ट्रीब्यूटर मान के चलने वाले हो, और सारा जो आपका सेल्स होगा उन्हीं के थ्रू होगा, आपका नया एक्सपेंशन कुछ नहीं कर पाओगे। एंड वो जो कॉस्ट आपको बताएगा भाई आई एम इंकरिंग सो मच कॉस्ट, वो आपको शेयर करने को बोल, दैट इज वन ऑफ पॉसिबिलिटी। सेकंड क्या बोलेगा, यू हैव टू रिड्यूस योर प्राइस व्हिच आर गिविंग टू अस। सो इन दोनों केसेस में अगर आप अपॉइंट ना करते डायरेक्टली करते हो तो जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है और पैसा भी अधिक खर्चा होता है। तो अगेन ऑन दैट रिक्वायरमेंट के द प्री रजिस्ट्रेशन का डेडलाइन इज 31 दिसंबर 2020 एंड रजिस्ट्रेशन का जो डेडलाइन है वो 2023। लाइक शुरू में शिशिर जी ने बताया था कि अगर आप प्री रजिस्टर कर लेते हो देन यू कैन कंटिन्यू बिजनेस टिल 2023 इवन इफ यू आर नॉट रजिस्टरिंग बिफोर 2023। लेकिन 2023 के बाद में अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो आपका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, और वो करने के लिए आपको प्री रजिस्टर करना पड़ेगा पहले से, तो आपको बिजनेस की कंटिन्यूटी मिलेगी। सो अभी के लिए आपके लिए एक ही डेडलाइन इंपॉर्टेंट है, दैट इज 31 दिसंबर 2020। कहने के लिए 2 महीने हैं, बट इसके पीछे एक्टिविटीज बहुत लगती है। रीच IT का जो सिस्टम है इन टर्की, वो भी कई बार अपडेट के लिए वो लोग स्टॉप कर देते हैं। ऐसे मौके पे प्री रजिस्टर करना का जो टाइम अधिक लगता है, तो लास्ट मिनट तक ना वेट करते हुए इट्स ऑलवेज गुड टू डू इट अपफ्रंट, ऑल्दो दिखने में अपने पास 2 महीने और है। GPC can help you in all the processes. We can do the pre-registration, we can do the registration for you, acting as your OR,
We can prepare the SDS. We can also help you with the chemical safety report preparation. We are authorized to do that. And we can communicate, with your downstream users, with the officials at Turkey, all the KKDIK authorities, and also consult and give, guidance on update to whatever is coming under the KKDIK regulations. gpcgateway.com हमारा वेबसाइट है, आप उस पर विजिट कर सकते हैं। एंड अगर आपको अपना पर्टिकुलर कैश नंबर के बारे में कुछ भी चेक करना है, जस्ट गो टू दिस कंप्लायंस एडवाइजर का जो लिंक है, once you click there you will get a cell जहां पे आपका कैश नंबर पंच इन करोगे and go for the search button, you will find all information regarding your that cash number for the specific country you are choosing for. So please visit that as well, so that आपको और भी थोड़ा इंसाइट मिल जाएगा कि आपकी जिम्मेदारी कितनी है regarding Turkish regulation. And इस presentation के बाद we will try to send across the slides to you, all the participants who have joined us. And also, if you want to look at the recording video, you can view it once you log into gpcgateway.com. I would like to thank you all here for your patient listenings, and I will request Jess, if there are any questions, we can take all those questions